Okay, class, let's continue the same topic, programming concepts part 2. So, I'll give you some of the examples of the selection statements like if then else and case of, right? Then let's presume you have to select a number between 1, 2, 3, either 1 or 2 or 3, right? So, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं to with the by using if then else condition, right? So let me write a statement output enter a number enter a number to print message, right? For example, input better if you can notice this, I am using these words in uppercase letters, right? So आपने भी से uppercase letters में use करना है all of it, right? Output, input, case of, if then else, loops के जो आप words use करेंगे for, next loop, repeat until, while and all that, right? So input, for example, input A it's a variable, right? आप कोई value enter करेंगे between 1 to 3 that will display a message. How, for example, let's say अब मैं एक condition लगा रहा हूँ if A is equal to 1 then फिर क्या होगा if A is equal to 1 means if you input 1 here, then this part, this is a condition, this will be executing, right? If A is equal to 1, then output you select, you have been selected, you selected 1. You better keep it then also, right? 1, option 1. You वैसे example दे रहा हूँ, right? Else, if you have not input the value 1, then this won't be executing. अब ये यहाँ पर आ जाएगा, right? Else part पर, right? Else if A is equal to 2, then फिर आपका message output आपने लिख दिया you have selected option number 2, right? अगर आपने option number 2 2 भी input दी है, then what happens? Again, else if A is equal to 3, then output you have selected option number 3. Else output you have not selected options between 1 to 3. Is that clear? Right? And if, right? And if इसका if आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, so this is and
ए है और इसका भी यहाँ पर एंड इफ और इसका ये वाला राइट ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल चलें बेटा सेम सिनेरियो लेट्स डू द सेम सिनेरियो विद केस ऑफ स्टेटमेंट्स राइट चलिए मैं केस आपके फॉर एग्जांपल देता हूँ तो फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन में व्हेन maybe you have an idea how to operate the ATM machine so जब आप कार्ड को इंसर्ट करते हैं then you see it asks you for 4 digit PIN number right so when you enter the valid PIN number that gives you so many options for example cash withdrawal fast cash balance inquiry payments transfer payments transfer and there are so many beneficiary and all that right so when you select this option fast cash only this part of the program is executed right only fast cash one right so it displays 5,000, 10,000, 1,000, and so on ठीक हो गया बेटा so it means you have multiple options. You can perform only one condition will be performed, right? So चलिए ऊपर वाले को हम बेस बनाकर अब क्वेश्चन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन सेम मैसेज आउटपुट enter a number between 1 to 3 enter a number between 1 to 3 right so input a is a variable which is used to hold the value अब यहाँ पर आपने लिखना है rather using if then else we are using now case of what case of a the case a of case a of different language बेटा different वो आपको syntax provide करती है right syntax mean how to write the command in any particular language right so case a of कर देते हैं case a of one means output यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हो यू हैव सेलेक्टेड ऑप्शन नंबर 1 selected option number 1 to output you have selected option number 2 3 output same message but यहाँ पे option number 3 right if you have not entered any value between 1 to 3 so that would directly jump on this option otherwise otherwise output you have not selected option you have not selected option between 1 2 3 ना 1 प्रेस किया आपने ना 2 प्रेस किया ना 3 प्रेस किया so that's it and case and case that's it same program अच्छा अब होगा क्या बेटा फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस इज अ सुडो कोड लेकिन इसका सिंटैक्स आउटपुट इनपुट स्टेटमेंट केस ऑफ स्टेटमेंट दिस may differ from language to language right so when you execute that pseudocode in some language pseudocode नहीं program actually so
when you select one input, जब आप one करोगे, a is equal to one, right? So that will look for the option number one. This is option number one. तो ये आपको मैसेज डिस्प्ले कर देगा, you have selected one option, option number one. For example, if you select five, यहाँ पे input आप five करते हो, it will look case number one, which is one, case number two, case number three, case number four, five. No, there is no case number five. So ये हमारे पास AC है, so that would jump on otherwise and it will display this message on your screen. Is that clear बेटा? चलिए केस आपकी एक और एग्जांपल करता हूँ. कैलकुलेटर, काइंड ऑफ कैलकुलेटर बनाते हैं हम केस ऑफ, राइट? कैलकुलेटर से पहले एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल जी बेटा, ओके ओके. फॉर एग्जांपल आउटपुट enter your choice number, enter your choice number, input choice. Choice is a variable beta. Choice is a variable that will hold a integer number. Integer number means whole number, right? Without any decimal, right? So what happens? Input choice, then अब हमने क्या करना है? Case of choice, case of choice. One is equal to, for example, answer that is equal to num1 plus num2. Case number 2, answer is equal to num1 multiplied by num2. 3, answer is equal to num1 minus num2, right? Otherwise, you can display a suitable message. Otherwise, you have not selected a valid input. आप यहाँ पे लिख सकते हो invalid input entered, right? End case, end case. So अच्छा, सॉरी बेटा, एक मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा सा बना देता हूँ, वीडियो रिस्पॉन्डर बना देता हूँ. राइट, आंसर की जगह यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ, आउटपुट सम ऑफ टू नंबर्स. ये मैसेज है, राइट? एंड द आंसर इज स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल आंसर, right? Or after that, second case, I am displaying this message output. What is happening there? Multiplication. Product of two numbers. Product of two numbers of each, and the answer is stored in this variable which is answer, right? And after three option, case number 3, we can display output. What is happening in this case? Subtraction. Answer is stored in answer. ठीक हो गया? Now it looks good. अब क्या होगा? Now you will see this message on the screen. Input choice. Now you have to select choice number 1, choice number 2, choice number 3, or
I can say case number one, case two, case three. If you select one, if you entered one here, that would jump on this case of one. जहाँ पर आपको आंसर ये कोई दो वेरिएबल्स हैं ऊपर आपने डिक्लेयर किए होंगे तो इन दोनों को ऐड करेगा वो राइट इनपुट ले सकता है डेफिनेटली इनपुट देना पड़ेगा आपको नंबर को देन इट विल sum the values and display the answer right same is the case with case number 2 and case number 3 if we have selected option number 2 यहाँ पे 2 input किया है rather than 1 so it will jump on this case number 2 and it will add number one and number two. What is number one and number two? यहाँ पर हम इनपुट भी दे सकते हैं उसको लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये किया कि दिस राउंड वी कैन यूज द वैल्यूज फार्मूला कैसे लगा सकते हैं इनपुट वन इनपुट नम टू ठीक हो गया सो दिस इज इट यहाँ पे अदरवाइज अगर आपने इन तीनों ऑप्शन में को भी सिलेक्ट नहीं किया तो दैट वुड डेफिनेटली जंप ऑन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज अदरवाइज so user has definitely like attempted or entered some value which doesn't fall in one to three options is that clear beta you can see this इसे आप 2 मिनट है आपके पास आप इसे देख लें इसे समझ लें you have any question ask me जी बेटा ओके yes you're right the input definitely आपको लेनी पड़ेगी input num1 and num2 right so that's why मैंने इसे B2 में से neglect नहीं किया so input num1 num2 with a suitable message you can like write here input please enter output जहाँ पे आप लिख सकते हो in the start the program enter first number then input num1 then output enter second number input num2 ये बड़ा मैसअप हो गया इसको सॉरी बेटा ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा input 2 then this message output enter your choice number input choice 1 then case of choice ये आपका ऐसे वर्क करेगा राइट आंसर इक्वल num1 plus num2 and num3 अच्छा आगे और ऊपर चलिए वाला क्वेश्चन भी देखिए ना दैट वाज क्वाइट सिंपल अच्छा 18 वाले ऑप्शन ओके इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ चेक करेगा अच्छा पहले आप ये चेक करें इसके बाद मैं ऊपर वाली ऑप्शन दिखाता हूँ
हाँ बिल्कुल ठीक है yes else for when the condition is false if आगे condition होती है बेटा right condition is false then removal of part is removal then it will jump on else part else part जो होता है वो उसमें statements check करेगा right statements में फिर वो execute करेगा if this doesn't fall then it would go on the next instruction block of code जो आगे if लगेगा right is that clear बेटा okay एक और एग्जांपल करते हैं बेटा इट्स अ वेरी सिंपल वन you need to find out a number is entered is that number is greater than 10 or not right that is very simple can you give it a try GDD yes for example चलिए मैं करा देता हूँ for example uh, output this is another example output please enter a number please enter a number input कैपिटल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ मैं फॉर इनपुट आउटपुट एंड इफ देन एल्स केस ऑफ के लिए ठीक है इनपुट num num is a variable okay if num is less than 10 then फिर क्या करना है आपने मैसेज डिस्प्ले करना है दैट्स इट आउटपुट too small number is too small else output valid number or it's a big number right output and then and if that's it so how does this program works this pseudocode by the way again same thing input num for example if you enter when you execute this program in some language visual basic python and java जो भी है right so input number that would ask you a number let's say आप enter करते हो 15 now num will be equal to 15 ठीक है ना ये वाला इसमें 15 is stored in display if 15 now num has value which is 15 15 is less than 10 no this condition is false so it won't work तो ये वाला part जो है ये that is not going to be executed right then it will jump on this part else. So this condition is false, then it jumps on the else part of it output value और आपके सामने ये output message नजर आ जाएगा value ठीक है बेटा so these are some of the examples of if else and case of next video में इंशाल्लाह I tell you about flow charts right flow chart कैसे बनाते हैं symbols कैसे होते हैं और डिफरेंट रिपोर्ट लिखेंगे हम प्रोग्रामिंग ठीक है ओके टिल देन टेक केयर बाय बाय